in the beginning, I was feared. I was like, hoga, nahi hoga, kya hoga? The interview process was both exciting and nerve-wracking. Basically, there are 3 rounds. So first one was, I tried like 5 to 7 company before that. So consider that 4 things, na seat method. Share your strength, discuss your education and training, highlight your achievement and mention your targeted goals, why you want this job. Basically, I suggest firstly go through the modules. अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे, डेली बाय डेली अपडेट नहीं करेंगे, तो हमारे लिए कोई जॉब नहीं है. So, good afternoon, everyone. This is Vivekanand from CloudyML's team. So, welcome to another podcast. So, we have our guest Shivangi Chauhan with us. So, she has done MSc in Biotechnology and then switched to data science domain. So, now she is working as a data scientist. So, let's know more about her from herself. So, yes, Shivangi, over to you. Please tell us more about yourself, like about your education background and then how you managed to switch to data domain. Okay. Hi, everyone. So I'm Shivangi Chauhan, originally from Haridwar, Uttarakhand. At present, I reside in Delhi. I completed my schooling at St. Mary in Haridwar in year 2017. My academic background includes PCB with information practices. So following my schooling, I pursued my master's and bachelor's degree in biotechnology from Vanasthali Vidyapeeth in Jaipur. So I was involved in a cricket team and I was a part of Rajasthani folk dance and learned horse riding, and I was also active in NSS during my college years. So as you said, currently I'm working as a data scientist in Teleperformance Global Service Private Limited since last 2 years. Great. So you are from Devbhoomi, Uttarakhand. Yes, I'm from Devbhoomi. Great. So how being from MSc background in biotechnology and then finally switching to data domain. So how did you manage to do this? So basically, as I'm from biotechnology part, biotechnology have some part of machine learning. So during my master's, my mom first heard about data science. So basically, she inspired me to pursue further in data science as with my master's. So it was like COVID time in 2021. So my mom inspired me about this to start with this. Okay. So she explored before then, right? About the data domain. Like she explored something like you should do this. This is like you are doing masters and now what you will do after that. So she's like worrying about me. So like she used to search what she will do. So she tell me, search about this, go this, do this, like this all. ओके ग्रेट. तो मम्मी ने आपको गाइड किया, बहुत बढ़िया. ठीक है. हाँ, मम्मी बोलती है आज भी कि देखो आज मेरी वजह से तुम कहाँ पहुंची, देख लो. तो लाइक शी इज माई गाइडेंस. अगर वो ना ढूंढ के लाती, ठीक है, तो मैं फिर उसके बाद तो फिर सारा काम हमारा ही होता है ना. मम्मी लोगों का तो क्या होता है, मम्मी पापा का कि थोड़ी सी सीढ़ी दे दो, आगे बढ़ो, बस यही. राइट. एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी होता है. हाँ ठीक जी. है, ताकि आप अपने प्रोफेशनल करियर में ग्रो कर पाए. ठीक है, सो बहुत अच्छा बात है. तो when you started learning, like how did you proceed with your upskilling journey? So basically, in my school days, with the biology, I have computers as a side subject now. So Okay. I knew a little bit of programming languages like SQL. So in initial days of career, like I don't know much about Python, and Python is the must language for a data scientist. So I in my beginning I related SQL with the Python. So that was the main. So to like learning Python, machine learning algorithms, or like theory is the part of biotech with the machine learning, but that programming language that a bit tricky for me. So that is what. So I So know. important. Yes, important thing is like computer science was there along with biotechnology.
Yeah. So, So that uh, is the beneficial for me. I have the- that knowledge with the bio. So that is for me. great, great. So you must have had a fear in the while learning Python, right? Hmm. So Python is not that. Of Not course, it is easy compared to other programming language, but you hmm. must be having such kind of a kind of fear in your mind that Python, was it so? No, matlab, in the beginning, it was like I was feared. I was like, hoga, nahi hoga, kya hoga. But little by little, I used to relate with the SQL. Like if there is min function, in the same function is in Python, but a little different way used to write. So I used to like correlate both the languages in this way. So Okay. सब धीरे 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 होता चला गया. At last, मतलब everything is on the line, and I was ready with something like that. Okay, okay. So how did you start hunting for the job? Like, how did you come to know about the openings in Teleperformance? Okay. So basically, as we know, there are several of Naukri portals like Right. LinkedIn. So basically, someone just guided me ki make your profile in the LinkedIn or the Naukri. So I've just created the profile and start applying as soon as I learn about this. And as I have also near to complete my master's degree. So there from Naukri, I get the about the teleperformance. Okay, okay. So how was your interview process in Teleperformance? So basically, as I have told you, in June 2022, I have started working in teleperformance. So it's been like 1 year, 10 months now. Currently, I'm been working here as a data scientist. So the interview process was both exciting and nerve-wracking, especially since it was the first time facing the interview with the panels. And so basically there are three rounds. So first one was the written test. So basically that involves all our skills like languages, what you know, what's that, something ability or a knowledge base. So second was the GD group discussion. So as I remember, we are the total 5 members. So they provided us the different case studies, and was we have to collaborate with something and explain each with a dynamic exchange of idea and perspectives. Okay, So at last, we only three was got selected for the personal round. So third was the one-to-one technical interview, like so that was with our VP of the company under which we are there. So they, malab they were expertise, what we know, something. So this was my experience. Like always, the first one is the special one, na? So this is my right, first company that is like special, and I still remember how was I was nervous that day. right, right, right. So before you got interviewed in Teleperformance, Hmm. like how many companies you tried giving interview? So I tried like 5 to 7 company before that. So Okay, firstly, I don't know about anything. So that was like it was like bitty, like nervous. I don't know about what we have should write in the resume, how we should proceed with that, how we should communicate with the panel. So like step by step, I learn and grab this opportunity in like okay, within 6 months of learning this Python, machine learning, and stats. right, right, right. So you are one of the right example, like from MSc Biotechnology, you switched to data domain, right? And you also have given interview in 5 to 7 companies before you got selected in Teleperformance, Yeah. right? So what would be your suggestion for current learners, like those who are in a process to upskill themselves, those who are fresher but Hmm. opting to enter into data domain? Hmm. So basically, as nobody just described me how to proceed with the that. So basically, first of all, we should look job description. What Okay. company you want Mhm. for that ideal candidate. That is the first step. Second, understand.
why you want the job, and your qualification, whether that is matching or not. So be prepared to Right. explain your interest in the opportunity and why you are the best fit to them, because you have to explain now why they should choose you. Thirdly, Right. research the company and role you are applying to. Learn about their products, services, and the mission. Right. Fourth, fourth was the my, that what I use. Practice the common interview questions. So consider Right. that four things, na seat method. Share your strength, discuss your education and training, highlight your achievement, and mention your targeted goals, why you want this job or something like that. So that someone get inspired from you, that that is the one she want that. So dress professionally so that they like she's ready there to present herself. So Right. be positive and grateful. The be aware of your weaknesses, so that choose those who choose that are more detrimental to the role, and Mhm. ask the thoughtful questions to the panels. Ki, what is their future plan if I enter in their team or something like. So these are the one which I inspire to today's youth. Right. Right. So suppose someone is very much fearful of programming language, that can be a query language like SQL or programming language like Python. What you would suggest? आप क्या suggest करोगे उनके लिए? So basically I suggest firstly go through the modules. मतलब खुद जाओ एक बार ही देखो खुद से, मतलब ये नहीं कि एकदम से किसी के पास चले जाओ कि हाँ वो हमें सिखा देगा. यू Right. वांट, तब तक हम खुद से उस चीज के पीछे नहीं जाएंगे. नोबडी विल गोइंग टू लाइक कि हाथ पकड़ के तुम्हें लिखना सिखाएगा. तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक चीज के लिए खुद सीखना पड़ेगा. वो पाइथन है, सीक्वल है, पावर बीआई है, कुछ भी है. तो खुद Mhm. मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा आगे. एक एक लैंग्वेज मतलब खुद, मतलब मेरा मानना तो यही है. आई जस्ट टेल कि start preparing from the day one by Right. yourself. Right. 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 So, if we talk about projects, okay, Hmm. so what kind of projects you suggest? Like, how many projects someone should do? Okay, and what should be the proficiency level while doing the projects? है ना? Like, I mean to say, if we do projects, we should not do just for the sake of putting it in resume. Hmm. Right. So, according to this, if you can help us like by answering like how they should do projects and what would be their proficiency level while doing the projects, or what should be their motto behind. So basically, as a data scientist, what I used to do. So basically, if we are using a Python languages, then we have to go to the coding languages. And if we are at the data analysis, like DAX part, Microsoft query, so that is a visualization part. So basically, my is like Python. So firstly, कि if we have the Excel file, how we can read that file to the Python. So then the basic EDA part, like cleaning, missing how can you can handle the missing values, how to encode the categorical values. So basically, there's a first. I'm currently working in a fraud team. So we have the short call data. So we used to have the KPI manipulation. We used to create different kind of KPI, like how can we can handle the average handle time, and how Mhm. can we handle the short call data. So we Mhm. know a basic, very basic EDA, how we can clean the data, how we can merge the two files. Like this is Mhm. a very basic. So we should start with the basic one, not like directly we will predict a model, we will build a model something. No, start with Mhm. the very basic ones. Right, right, right. Okay. So, like if we talk about your views related to job market of data domain, Hmm. so what is your say about this? Like अभी के सिनेरियो में कितनी जॉब्स हैं इस पर्टिकुलर डोमेन में? बट मेरा पूछने का ये है कि देयर आर सो मेनी लर्नर्स, okay, those who are in a way to upskill themselves, they have sense of fear that there is no job in the market of data science or data analyst
or ML engineer, similar kind of job. But अब what do you say about this? ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, बट हमेशा हम एक ही स्किल पे अगर रहेंगे तो अपस्किलिंग तो नहीं होगी ना. वी Right, हैव टू अपस्किल एवरी टाइम, एंड आर डोमेन इज लाइक वी हैव टू लर्न ईच डे. right, कि आज अगर ये है कि पाइथन अगर सीख लिया है तो पाइथन पे जिंदगी नहीं गुजर सकती है ना. right, तो जरूरी नहीं कि डेटा साइंटिस्ट ही है. डेटा साइंटिस्ट की भी हजार है, मशीन लर्निंग इंजीनियर है, एआई इंजीनियर है, क्लाउड कंप्यूटिंग है. तो आप आपको किस डोमेन में जाना है. अब डेटा साइंस के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एजोर पे कैसे हम लोग लाएंगे, सब कुछ लाएंगे. सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, जो मैं हमेशा से कह रही हूँ कि अगर हम अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे, डेली बाय डेली अपडेट नहीं करेंगे, तो हमारे लिए कोई जॉब नहीं है. अपडेट इज वेरी मस्ट इन आवर फील्ड, क्योंकि रनिंग है, इतना कंपटीशन है. हर कोई right, चाहता है कि हम बेस्ट से बेस्ट दिखे, बेस्ट से बेस्ट वी होल्ड द पैकेज. सो वी हैव टू अपस्किल बाय आवर. और जॉब है, किसने कहा जॉब नहीं है. सब कुछ है, right, बस वही है, मेहनत करो, अपस्किल करो अपने आप को. जॉब है, अच्छे से है जॉब. right, 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 right. ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि डेटा साइंस डोमेन में अ, आपने और बताया भी है कि चलो जो स्किल्स है रिक्वायर्ड, एक्सेल, टैब्ल्यू, पावर बीआई है, ये सब तो चलो टेक्निकल स्किल्स है, बट इसके अलावा और क्या क्या स्किल्स चाहिए जो जरूरी है एक डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट के लिए? सो व्हाट आर दोज स्किल्स नीडेड? सो बेसिकली, हाँ, आपने सही कहा कि वो तो टेक्निकल हो गया. नाउ वी कैन टॉक अबाउट नॉन टेक्निकल. सबसे यस, पहले तो हम डेटा साइंटिस्ट encounter complex problems. So राइट, we should have the ability to analyze the problem, break down, and diverse the creative solution is crucial. मतलब we राइट, have the knowledge कि what we need to do, what's the business problem. Firstly, राइट, we should know what is the business problem. Then only will do ना. जैसे डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको क्योर ही नहीं पता होगा तो वो मतलब उसको आपको यही नहीं पता होगा आपको डिसीज क्या होगा, तो वो क्योर क्या करेगा आपको. क्या तो सही बात, मेन है, सबसे पहले बिजनेस प्रॉब्लम पता होना चाहिए आपको कि आपको पाइथन की जरूरत है या बीआई की जरूरत है या किसकी जरूरत है. राइट, आपको सीखना क्या है. सो दैट इज द मेन. उसके बाद है अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच डेटा साइंस डोमेन, व्हाट डेटा साइंस ऑपरेट्स. So what is the business goals and industry dynamics? So, and how the data driven decision impact the organization. So राइट, third was the translate complex findings into the clear actionable measures for stakeholders. In our case, we should know how we can describe the story to the client. So storytelling is the must. Ki how's this started, how is this working, how it will going to go in the future. So that is the राइट, main. And राइट, fourth one was the be curious about the data. Ki what kind of data it is, what is the pattern it is showing, and trend it is following. So that यस, is. Sixth one, the data analysis requires the precision. How we can detect the error, validate the results, and ensuring data are the crucial. So basically, we should know how's data looking, how it will be going to give the results. So basically, that what I explained the EDA part. We should know राइट, about that, ki how data trend and what is with the data. great, great. So while working as a data scientist, you must be having a lot of data to handle it. You will have to work a lot, right? Hmm. And of course, when you work a lot, you also come across a stress. So how do you manage the stress? So basically, stress. So when I got stress, so I love dancing. I just know कि या तो मुझे पीस चाहिए. I just stop working out there. I just meditate and start कि what I can do. Firstly, I कभी कभी मैं पैनिक हो जाती हूँ, बट नहीं, I just start like meditating कि नहीं अब क्या होगा. Just stop working and meditate. Like कि क्या स्ट्रेस को कैसे रिलीज करेंगे, क्योंकि ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा. Right, So basically,
आई एम जस्ट गिविंग माई टाइम टू माई सेल्फ सो दैट कि मैं आगे कैसे प्रोसीड करूँ. राइट. सो यही है मेरा एजेंडा कि आगे फालतू में इधर उधर हाथ मारने से अच्छा है थोड़ा सा शांत हो जाओ कि आगे का कैसे प्रोसीड होगा. राइट, राइट, राइट. ठीक है. सो अगर मैं आपसे पूछूं कि what are these steps? Okay, so हम्म. while someone is going to sit for an interview, हम्म. okay, so what he should keep in mind, or how he should prepare himself for the interview? ओके. सो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द कॉमन इंटरव्यू चैलेंजेस. Mhm. सबसे पहले तो मतलब कैसे प्रिपेयर करना है उसको. तो सबसे पहले रिसर्च रिसर्च अबाउट द कंपनी कि उसका वो क्या सोल्यूशंस दे रही है, ये क्या उसका मिशन है या किस रोल के लिए वो आपको हायर कर रही है. Right. दूसरा, मॉक इंटरव्यूज हमारे पास बहुत होते हैं हर कंपनी के. आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि उसका मॉक इंटरव्यू कैसा है, हम क्या क्या लर्न कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं. उसके बाद वी कैन मतलब किस रोल के लिए जीडी जीडी में देख सकते हैं कि वो क्या चीज मांग रहे हैं, क्या स्किल्स वो कर सकते हैं. हम उस स्किल्स को पर्टिकुलरली पढ़ सकते हैं उसके बारे में जो जो वो स्किल है सो दैट कि हम लैक ना करें कहीं भी. Mhm. सो फिर हम लोग मतलब और स्किल्स देख लेंगे, अपने अपने आप को रेडी कर सकते हैं कि हम कहीं भी बैक स्टेप ना रहे. हमारा जो वीक पॉइंट्स है कि जैसे ये मेरा वीक है तो मैं ध्यान रखूं कि मेरा वीक पॉइंट सामने ना आए. Right. तो यही सब है मतलब इवन अपनी इवन हमें वो चीजें रेज्यूमे में भी नहीं मेंशन करना चाहिए हाँ, जिस पे हम जो खुद जो कॉन्फिडेंस. नहीं आते हैं फालतू में उसको क्यों मेंशन करना है, क्योंकि अगर वो मेंशन भी हो गया आप कितना रट के चले जाओगे. राइट, राइट. इसलिए और जो रटे हुए. हम्म. इसलिए जो आपको आता है वही मतलब बेसिकली क्लियर एंड कट रहो. कितना जितना आप झूठ लिखोगे उतना वो, क्योंकि सबको रिज्यूम का खेल होता है. आप जो रिज्यूम पे लिखोगे वही आगे बढ़ेगा, क्योंकि राइट, रिज्यूम वो पूरा ऊपर से नीचे एक एक क्वेश्चन रिज्यूम से पूछा जाता है. राइट, 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 राइट. So what is the role of hiring platforms like Naukri.com, Angel, HireAct या LinkedIn, है ना? हम्म. So how much these platforms help you in getting a job? और इसमें बेस्ट कौन सा है? अकॉर्डिंग टू मी लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल दिखा सकता है कि Right. ये है लिंक्डइन आपको पूरा मतलब ये बंदा है, इसने ये किया है ये. बट मैंने जो अब तक अपना करियर में देखा है मुझे नौकरी से ज्यादा आता है. Okay. लिंक्डइन से आ भी जाता है बट मैं अप्लाई भी कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता. वेरी फ्रैंकली मतलब मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ कि हाँ ये डोइंग गलत. तुम्हें आता होगा, मे बी आप लोगों को आता होगा किसी किसी को लिंक्डइन से, बट मुझे लिंक्डइन से बहुत रेयर आया है. मतलब नौकरी से मेरे पास मार्क्स आया है, मुझे इंटरव्यूज भी हुआ है, सब कुछ कॉल हुआ है, बट ज्यादातर एज कम्पेयर टू लिंक्डइन एंड नौकरी, नौकरी ज्यादा अपॉर्चुनिटी देता है. Right, मतलब right. चांसेस So, ज्यादा होते हैं. हाँ. So motto behind asking this question was like the learner who are like in search of job in data हम्म. domain, they can हम्म. opt for the better platform, right? Yes. Instead of हमें भी नहीं hovering पता here था. there. हमें भी नहीं पता था, हम भी सोचते थे नौकरी बस सिर्फ लिंक्डइन लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लो, लिंक्डइन से अप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा. बट धीरे धीरे सीनियर से कांटेक्ट करो, मैनेजमेंट बताते हैं, सब बताते हैं कि नहीं नौकरी पे जाके देखो. तो एज कम्पेयर टू मतलब लिंक्डइन लिंक्डइन आप नौकरी पे भी आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल दिख जाएगी, क्योंकि वो बोलते हैं कि लिंक्डइन दे ये दो. तो ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन आपका हट जाएगा, बट हाँ एज कम्पेयर टू लिंक्डइन नौकरी ज्यादा बेटर ऑप्शन है फॉर अप्लाइंग एंड गेटिंग जॉब्स. Great, great, great. So nowadays, if we talk about the scenarios of interview in the company, we see so many job descriptions, right? हम्म. Posted by the company. In that, we see there is nothing like specific to data analyst, like tools, like we need to focus on only tools. Okay, if we are hiring as data analyst, still there is a questions related to machine learning, basics of machine learning, which is a part of हम्म. data science, right? हम्म. हम्म. So what would you suggest in these scenarios? Like someone should prepare only for the data analytics skill first, or they should prepare according to the requirement of the company or बेसिकली industry?
हाँ मतलब देखो, अपने पे भी बात होती है। मतलब पहली बात तो देखो, जीडी बहुत मेन होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर अप्लाइंग राइट फॉर एनी कंपनी। बट आप भी क्लियर होने चाहिए ना कि आपका स्ट्रेंथ क्या है या वीकनेसेस क्या है। मतलब आप पूरी तरह से उस पर भी नहीं जा सकते हो ना कि आप डेटा एनालिसिस की जॉब ले रहे हो या उस पर क्या ले रहे हो। आपको क्या आता है वो भी डिपेंड करता है ना। या तो आप पहले एक अपना गोल बना लीजिए कि नहीं, मेरे को डेटा एनालिसिस में जाना है और डेटा एनालिसिस के लिए ये मेन मेन है। राइट एंड अगर डेटा साइंस में जाना है तो डेटा साइंस के लिए ये मेन मेन है। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं कि आप किसी में अप्लाई, क्योंकि दोनों बहुत डिफरेंट है। राइट बहुत मतलब एक तरह से सेम भी नहीं कह सकते, but बहुत डिफरेंट है दोनों। एक कोडिंग है, एक नो एक विजुअलाइजेशन पार्ट है। तो बेसिकली आपको पहले अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि आपको किधर जाना है। उसके राइट बाद जीडी आप देख सकते हैं, जीडी में क्या किया, जीडी के हिसाब से आप प्रिपेयर करें कि हाँ, अगर हम मुझे ये कंपनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो उस पोजीशन के लिए जीडी में ये लिखा है, तो हम उस अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए इन फ्यूचर में। राइट मेरा सजेशन तो यही है। फाइन फाइन ठीक है you have shared very inspiring journey. Okay, so we'll end the podcast over here. So thank you everyone for watching the podcast. We'll meet again. Okay, thank you everyone. Thank you so much.